हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को। हम हैं इस समय यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासरूम में। हम डिटर्मिनेंट के ऊपर क्लास कर रहे हैं। क्लास 12 का पार्ट है। यहाँ हमारा लक्ष्य है, हम यहाँ पर CBSE और ICSE बोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा लक्ष्य है कि क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस समय हम क्लास 12 का डिटर्मिनेंट, ये क्लास 12 का पार्ट है और हम डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत दिनों से बहुत सारा क्लास हो गया इसके ऊपर। अब हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने का। तो इस समय डिटरमिनेंट का जो पार्ट हो रहा है ये 33 का प्रॉब्लम है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका ये जो 33 का प्रॉब्लम, ये इससे दिखाना पड़ेगा 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इसका वैल्यू है। प्रूफ करने के लिए कहा है दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। प्रूफ करते हैं। देखिए, ये हम वहाँ पर 1/ABC लेते हैं और ये a से मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो गया स्क्वायर बी और ये स्क्वायर सी। R1 को a से, R2 को b से और R3 को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम 1/a 1/b 1/c ले लिया। ये बी स्क्वायर a हो जाएगा, ये b इंटू सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर सी, और यहाँ पर सी स्क्वायर a सी स्क्वायर b और यहाँ पर c इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ये जो C1 है, C1 से a, C2 से b और C3 से c ले लेते हैं। तो यहाँ पर ABC/ABC हो गया, क्योंकि C1 से a क्या पड़ा रहेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा a स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो होगा यहाँ पर हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, R1 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी ये 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये R1 डैश R1 प्लस R2 प्लस R3. Now we are taking 2 and then determinant here b square plus c square, then b square, then c square, then c square plus a square, then no c square not, then c square plus c square, yes, then again c square plus c square, then c square, then a square plus b square, then b square, then a square plus b square. Now we have to calculate. Now we have to calculate R2 dash is equal to R2 minus 1 and R3 dash is equal to R3 minus R1. 2 into, this is equal to 2 into R2 dash R2 minus R1, R3 dash R3 minus R1, and the value is R2 dash R2 minus R1, this is b square plus c square, b square plus c square, then c square plus a square plus b square, then here this is minus c square minus b square, and here is 0, here is minus a square, here is minus a square, and this is 0. Okay, now we are getting the value R1 dash is equal to, here again is equal to 2 into, this is R1 dash R1 plus R2 plus R3. Now we are getting the value R1 dash, this is plus minus 0, this is only a square, this is only b square here, this is minus c square minus b square minus c minus, this is 0 minus c square, this is minus a square, and this is 0. Okay, now we are getting the value is equal to 2 into 0 minus a square into this minus plus a square, or this is, oh here is, this is b square. R2 dash is equal to R2 minus R1. We have to show a square, b square, c square. A square, this is c square. Okay, here is, this is c square, here a square, c square, a square,
r1 dash and c square c square. We are checking the value again. b square c square c square c square a square c square b square a square b square, then minus c square minus b square 0 minus this will be here, this is c square and this will be here minus a square, r3 dash minus r1 c minus c, this is minus c square, so minus a square, sorry, and this is minus a square 0, then this is a square here, this is a square, and r1 dash is equal to r1 plus r2 plus r3. Then if we take r1 dash is equal to r1 plus r2 plus r3, after this calculation we will get this is minus a square also, this is minus c square, this will be minus a square, okay. Then calculating, then adding, we get this is 0 total, this will be c square only and this will be b square only minus a square, then c square a4, we are getting c square a4, then b square a square c square matching, but here c square and 0 a square b square, here is c square and minus c square into, there will be c minus c square into minus c square into, this is 0, then minus plus c square a square b square plus this is b square into a c square a square, then total value 2 or 2 a square b square c square equal to 4 a square b square c square. This is the value, 4 a square b square c square. Okay, we have to prove the equal to 4 a square b square c square. Now we are going to 34. Okay, number 34 here. Here 0 b square a c square a. Here 0 b square a c square a. Okay. Then a square b 0 c square b. A square b 0 c square b. A square b 0 c square b. A square c b square c 0. Here is a square c b square c 0. Now we have to prove from this 2a cube b cube c cube. We have to prove 2a cube b cube c cube. Okay. We have to prove 2a cube. We are taking a from the first row, b from the second row, and c from the third row. Then we are getting a b c 0 b square c square a square 0 c square a square b square 0. Now we are taking a square from c1, b square from c2, and c square from c3. So a b c into a square b square c square, and here is 0 1 1 1 0 1 1 1 0 is equal to a cube b cube c cube. This is very easy problem. Into, we are getting 0 minus 1 into 0 minus 1 plus 1 into 1 minus 0. Expanding, we get this a cube b cube c cube, and here is 0 minus minus plus 1 1 plus 1 is equal to 2 a cube b cube c cube. This is the value here. We have to prove a cube b cube c cube, and we have proved this. Okay. Next problem 35. Next problem number 35. We will solve this. Number 34 is very easy. Then number 35. We are solving number 35. Here is a square plus b square by c. Here is a square plus b square by c.
then is a square plus b square by c, then c, then a, then c, then a, and then b square plus c square by a, then b square plus c square by a, and then a again, and next is b c square plus c square by b, and then b c square plus a square by b. Okay, this is a square plus b square by c, a, b square plus c square by a, b c square plus a square by b. We have to prove this is equal to 4abc. We have to prove this is equal to 4abc. Okay, we have to prove this. Let's start. We are taking here multiplying ABC and taking 1 by ABC. We are getting, this is 1 by ABC here, and then we are multiplying this by C, this by A, and this by B. Then we are getting a square plus b square, c square, a square, b square plus c square, a square, b square, c square plus a square. This is the one of the easy form. Okay. Now r1 dash is equal to, we are taking r1 dash is equal to r1 minus r2 minus r3. r1 minus r2 minus r3, and we are getting the value 1 by ABC. This is 0. C square minus c square cancel out. This is minus 2b square, and this is minus 2a square, and this is a square, this is b square, this is b square plus c square, b square, a square, c square plus a square. Okay. Again we will calculate r2 dash is equal to r2 minus r1. This will be easy. r2 dash is equal to r2 minus r1. r2 dash r2 minus r1, r3 dash r3 minus r1. Okay. Then we will get here 1 by ABC, r2, this will be 0, and we are taking 2 minus b square minus a square, r2 this will be a square, here will be minus minus plus, r2 dash is equal to r2 minus r1, and first we take 2, first we take 2 outside. Okay, then we will calculate this. Minus 2 you are taking, minus 2 here. This is minus b square, minus 2 you are taking. This is b square plus c square, and this is a square, this is b square, this is b square, and this is c square plus a square. This is equal to minus 2 by ABC, and this is equal to 0, b square and a square. Here we are taking r2 dash r2 minus r1, r3 dash r3 minus r1. Okay, r2 dash r2 minus r1, r3 dash r3 minus r1. This will be here a square, and b square minus b square, this will be only c square, and this will be 0. A square minus a square 0, and this will be only b square, and here will be b square minus b square 0, and c square plus c square. After cancelling this, there will be only c square. Okay, this is the value. Now we are simplifying. After simplifying, here is minus 2 by ABC, and first 0 minus b square into, this is c square into c square minus 0. Here is 2 c square. Here is b square into a square c square minus 0. A square c square minus 0 plus a square into 0 minus b square c square. This is the value. Is equal to minus 2 by ABC minus a square b square c square minus a square b square c square into minus 2 a square b square c square.
we are getting this. After calculating minus minus plus 2 into 2 4 and this is cancel out, 2 ABC is equal to 4 ABC. This is the value 4 ABC. Okay, we have to prove this is equal to prove this is equal to 4 ABC and here is proved. Okay, तो 35 तक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। कुछ भी समझने की दिक्कत रह गया तो हमें ज़रूर बताना कमेंट में, तो हम दोहराएंगे वो प्रॉब्लम। 35 तक हमारा सॉल्व हो गया। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।